Hello everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry Club. यूट्यूब पे FFB लाइव केमिस्ट्री क्लास 11th एंड 12th ये मेरा यूट्यूब चैनल है। केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे तुम्हें स्टडी करनी है तो चैनल सब्सक्राइब करके सारी सारी चीज़ें कंप्लीट कोर्स ऑफ 11th एंड 12th इस पे मिल जाएगा। जो भी चीज़ पढ़नी हो उसको सर्च करके पढ़ सकते हो। आज का क्लास हम थर्मोडायनेमिक्स पे चल रहा है। क्लास तुम लोगों का पिछला 2-3 क्लास हो चुका है थर्मोडायनेमिक्स पे। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स में लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, बॉन्ड एनर्जी एंड हीट ऑफ रिएक्शन, इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में अब 2 लेक्चर और बाकी हैं, जिसमें से एक तुम्हारा आज हो जाएगा और एक कल हो जाएगा। उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पे खास ध्यान देना। तो आज का टॉपिक है लॉज ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री, बॉन्ड एनर्जी एंड हीट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंथैल्पीज पे। हम डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में। तो इंथैल्पीज पे हम जो कुछ बाकी रह गया था पहले उस पर डिस्कस करते हैं। ये है इंथैल्पीज ऑफ फिजिकल चेंज या और फेज चेंज। Now, heat energy is involved in a physical state of substance is change. Some important enthalpies of physical changes are as first enthalpy of fusion. Fusion means solid का liquid में convert होना. This is known as fusion. Now, enthalpy of fusion, it is the enthalpy change in converting 1 mole of substance from solid state to liquid state at its melting point. The enthalpy of fusion equals to latent heat of fusion per gram multiplied by the molecular mass. The value of enthalpy of fusion gives an idea about the strength of the intermolecular forces operating in a solid. The values of enthalpies of fusion for ionic solids are much more than molecular solids, in which molecules are held together by weak van der Waals forces. When solid H2O means ice melts, then it converted into liquid. Then heat of conversion is equal to 1 points. This is the heat of fusion, 1.44 kilocalorie. And when water liquid is freezes to go H2O solid, that is I, then H delta H freezing is equal to minus 1.44 kilocalorie. Here energy is evolved and here energy is absorbed. Now enthalpy of vaporization. It is the enthalpy change in converting 1 mole of the substance from liquid state to gaseous state at this point, at its boiling point, like H2O liquid when boiled converted into water vapor, that is H2O gas. Here delta H is equal to 10.5 kilocalorie. Energy is absorbed here. And when H2O gas is condensed, then it forms liquid H2O. Then delta H condensation is equal to minus 10.5 kilocalorie, means energy is evolved in this process. Enthalpy of vaporization of liquid give an idea about the strength of intermolecular forces operating between the molecule of the liquid. Now, enthalpies of sublimation. Some substance, when heated, they changes to directly gas. Solid substance they changes to directly in gaseous state. This phenomenon is known as sublimation. Sublimation is the process in which a solid on heating is directly converted into vapor state. It is the heat change in carbon. It is the heat change in converting 1 mole of a solid directly into its vapor at a given temperature below its melting point. I to iodine
Solid, when heated, it goes to iodine gas, and here delta H is equal to 14.9 kilocalorie. That is, energy is absorbed here. The enthalpy of sublimation of solid is equal to the sum of enthalpy of fusion and enthalpy of vaporization. Delta H sublimation is equal to delta H fusion plus delta H vaporization. Now come on the laws of thermochemistry. Two important laws of thermochemistry are known, which are based on first law of thermodynamics. First is Lavoisier and Laplace law. The law was given in 1780. It's stated as follows. The heat which is required to decompose a compound into its element is equal to the heat evolved during its formation from the elements. In other words, enthalpy of decomposition of compound is numerically equal to the enthalpy of its formation with opposite sign. This rule has been extended to reactions of all types. That is, action and reactions are equal and opposite. Some examples are here. Carbon reacts with carbon solid reacts with oxygen to form carbon dioxide. For this, delta H is equal to minus 94.4 kilocalorie. Here energy is released. Now CO2 is converted into C plus O2. Then delta H is equal to 94.4 kilocalorie. Here energy is absorbed. In the second case, तो दोनों ही पोजीशन में एनर्जी सेम है, अपोजिट है सिर्फ साइन इनके. H2 plus half 2 react heated to form H2O liquid. Here delta H is equal to minus 68.8. And H2O liquid is decomposed into H2 and half O2. Delta H is equal to equal with opposite sign 68.0 kilocalorie. Another example, aluminum. Solid aluminum reacts with aqueous solution of HCl to form Al2CCl6 aqueous and H2 gas. Here delta H is equal to minus 24.4 kilocalorie, and in reverse reaction when Al2Cl6 reacts with hydrogen to form aluminum and HCl. Here delta H is equal to same with opposite sign. It is another example. Calcium oxide reacts with H2O to form calcium hydroxide, and calcium hydroxide decomposes to give calcium oxide and liquid like this. तो दोनों ही पोजीशन में डेल्टा H equal but opposite sign. Now second law of thermochemistry is a Hess's law. This is the law of constant heat summation. This is known as Hess law. This law was presented by Hess in 1840. According to this law, if a chemical reaction can be made to take place in a number of ways, in one or in several steps, the total enthalpy change is always the same. That is, the total enthalpy change is independent of intermediate steps involved in the change. The enthalpy change of a chemical reaction depends on initial and final stages only. Let a substance A be changed in 3 steps to D with enthalpies changes from A to B delta H1 calories, from B to C delta H2 calories, and from C to D delta H3 calories. The total enthalpy change from A to D will be equal to the sum of the enthalpies involved in the various step. That is, total enthalpy change delta H step is equal to delta H1 plus delta H2 plus delta H3. This is the Hess law. Now, if D is directly converted into A, let the enthalpy change be delta H direct
According to His law, delta H steps plus delta H direct is equal to 0. That is, delta H steps must be equal to delta H direct numerically, but with opposite sign. In in case it is not so, say delta H steps which is negative is more than delta H direct, which is opposite. Then in one cycle, some energy will be created which is not possible on the basis of first law of thermodynamics. Thus, delta H steps must be equal to delta H direct numerically. Now, Hess's law can also be verified experimentally with the help of some examples. First, formation of carbon dioxide from carbon. First method, carbon is directly converted into carbon dioxide. Here delta H is equal to minus 94.0 kilocalorie. Second method, carbon is first converted into carbon monoxide and then CO is into CO2. That is, conversion has been carried out in two steps. C plus O2, half O2 forms CO. Here delta H is equal to minus 26.0 kilocalorie and CO plus half O2 forms CO2. Here delta H is equal to minus 68.0. Total enthalpy change C plus C CO2 C2 CO2 is, दोनों को हम सम निकालेंगे तो आएगा minus 94.0 किलो कैलोरी. This is the example of Hess law. Now formation of ammonium chloride from ammonia and hydrochloric acid. This is the two-step reaction. NH3 reacts with HCl to form NH4Cl. Here delta H is equal to minus 42.2 kilocalorie and NH4Cl प्लस एक्वस सोल्यूशन. अब ये पहले तो ये तुम्हारा गैसेस रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड गैस बनाती हैं, फिर इसको एक्वस सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे डेल्टा H आता है प्लस 4.0 कैलोरी. तो ओवरऑल रिएक्शन दोनों को ऐड करेंगे प्लस माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस 38.2 किलो कैलोरी. तो सेकेंड मेथड किस तरह से अडॉप्ट कर सकते हैं? NH3 डिजॉल्व हुई एक्वस में तो ये एक्वस NH3 बन गया. इसके लिए डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 8.4 किलो कैलोरी. हियर इज द एनर्जी इवॉल्व. HCl एक गैस थी, एक्वस सोल्यूशन बनाया गया इसका तो इसमें डेल्टा H आया माइनस 17.3 किलो कैलोरी एंड NH3 एक्वस एंड NH3 एक्वस HCl एक्वस दोनों को मिक्स किया गया तो अमोनियम क्लोराइड एक्वस सोल्यूशन फॉर्म हुआ जिसके लिए डेल्टा H आता है माइनस 123 और 12.3 किलो कैलोरी. टोटल कितना आएगा जितना पहला जो फर्स्ट मेथड देखा था डायरेक्टली बनाया था. तो अब इसका टोटल जो इंथैल्पी है वो कितनी आ रही, NH3 प्लस HCl प्लस एक्वस सोल्यूशन बनाया इनका तो अमोनियम क्लोराइड जिसके लिए डेल्टा H इज इक्वल टू माइनस 38.0 किलो कैलोरी. ये पहले जो फर्स्ट मेथड में देखा था दोनों सेम आ रहा है, जबकि जब हम स्टेप वाइज करते हैं तब और जब डायरेक्ट करते हैं तो भी जो वैल्यू है वो ही टोटल इंथैल्पी वो सेम आती है. Now conclusion of this discussion, the heat of formation of compound is independent of the manner of its formation. तो ये conclusion किसका है? Hess law के ऊपर जो हमने अभी इसका explain किया उसका conclusion यहाँ पे दे रहे हैं. The heat of reaction is independent of the time consumed in the process. The heat of reaction depends on the sum of enthalpies of products minus sum of the enthalpies of reactants. Thermochemical equations can be added, subtracted or multiplied like algebraic equation. Now application of Hess law.
For the determination of enthalpies of formation of those compounds which cannot be prepared directly from the elements easily using enthalpies of computation of compound. The second application for the determination of enthalpies of extremely slow reaction. Third, for the determination of enthalpies of transformation of one allotropic form into another. And for the determination of bond energies, for the determination of resonance energy, and for the determination of lattice energy. Now, how to take thermochemical calculations. For making thermochemical calculation, the following points are kept in mind. First, write down the required thermochemical equations. For example, if heat of formation of methane is to be determined, write down the following equations. See, सी गैस स्टेट सॉलिड इस फॉर्म में होगा और उसके बाद H2 गैस दोनों में रिएक्शन होता है तो बनता है मीथेन CH4 डेल्टा H मालूम करना है. Try to obtain the required equation from the given data. This can be done in two ways: by adding, subtracting, and multiplying the various given thermochemical equations. And second, heat of reaction is equal to the total enthalpies of product. Heat of reaction is equal to, that is total enthalpy of the reaction is total enthalpies of the product minus total enthalpies of the reactant. This important point. In case of calculation of heat of formation, the enthalpies of free elements can be arbitrarily fixed as 0 at 25 degrees centigrade and 1 atmospheric pressure. Now see the example. Calculate the heat of formation of acetic acid from the following data. Acetic acid liquid reacts with oxygen to form carbon dioxide and water. Here delta H is equal to 207.9 kilocalorie. Now here अब यहाँ हमको कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिल रही है, C प्लस O2 रिएक्ट करते हैं तो CO2 बनता है. डेल्टा H इज इक्वल टू -94.48 and for the H2O, hydrogen burned with oxygen to form liquid water. Here delta H is equal to -68.4 kilocalorie. तो दो मेथड इसमें अडॉप्ट होते हैं. पहला ये टोटल रिएक्शन दिखाया. This equation can be obtained by multiplying equation second by 2 and equation third by 2 and adding both and finally subtracting equation. सेकेंड मेथड हम ज़्यादा इजी पाते हैं, उसको देखो. अब ये पूरे जो रिएक्शन तीनों दिया था ऊपर, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, enthalpy of carbon dioxide is equal to this, enthalpy of water is equal to this. Now enthalpy of O2 by convention is 0 क्योंकि ये फ्री स्टेट में है. Now delta H of equation first, enthalpies of product minus enthalpies of reactant. तो सारी वैल्यूज रखने पे हमें डेल्टा एच ऑफ फर्स्ट इक्वेशन मालूम हो जाएगा और रख दिया सारी वैल्यू. टोटल वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पे हमें CH3COH की वैल्यू नहीं दी है, उसको निकालने के लिए सबकी वैल्यू रख के हम इस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन CH3COH मालूम हो जाएगी. The second, how much heat will be required to make 2 kilogram of calcium carbide according to the following reaction. CaO, calcium oxide reacts with carbon to form calcium carbide and carbon monoxide. The heat of formation of CaO, CaCO2 and COR, these values minus 151.6 minus 14.2 minus 26.4 kilocalorie respectively. Now solution is that delta H is equal to sum of the enthalpy of product minus sum of the enthalpy of reactant. तो प्रोडक्ट
कौन से हैं? ये दोनों हैं, इन दोनों की एंथैल्पीज माइनस जो रिएक्टेंट है उनकी एंथैल्पीज को जोड़ करके इसमें से माइनस किया, सारी चीज़ें निकालने पर कितना आएगा? 111 किलो कैलोरी। For the formation of 64 ग्राम ऑफ CaCO2, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 64 ग्राम ऑफ CO3। For the formation of 64 gram of calcium carbide, 111.0 kilocalorie of heat is required. So heat required for making 2000 gram of calcium carbide. तो 111 अपॉन 64 इंटू 2000, ये आ जाएगा 3468.75 किलो कैलोरी। Now come on the bond energy or bond enthalpies. When a bond is formed between atoms, energy is released. Obviously, same amount of energy will be required to break the bond. The energy required to break the bond is termed bond dissociation energy. The definition of bond energy is the amount of energy required to break 1 mole of the bond of a particular type between the atoms in the gaseous state. That is to separate the atom in the gaseous state under 1 atmospheric pressure and specified temperature is called bond dissociation energy. For example, H फॉर्म 2H, तो HH बॉन्ड के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 433 किलो जूल। CCl बॉन्ड की जो इंथैल्पी है वो है प्लस 242.5 किलो जूल। इसी तरह HCl के लिए डेल्टा H इज इक्वल टू 431 किलो जूल पर मोल। आई बॉन्ड के बीच की इंथैल्पी जो फॉर्मेशन में, इन बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में जो एनर्जी यूज होती है वो सबकी वैल्यू यहाँ पे सामने दी है, छोटा ही रखना पड़ेगा। The bond dissociation energy of diatomic molecule is also called bond energy. However, the bond dissociation energy depend upon the nature of bond and also the molecule in which the bond is present. When a molecule of compound contains more than one bond of the same kind, the average value of the dissociation energy of a given bond is taken. This average bond dissociation energy requires to break each bond in a compound is called bond energy. Consider the dissociation of water molecule which consists of two OH bonds. The dissociation occurs in two stages. H2O dissociate into H plus OH. Here delta H is equal to 497.8 kilo joule per mole, and for the breaking of OH, any HO bond, delta H is equal to 428.5 kilojoule per mole. The average energy of these two bond dissociation energies give the value of bond energy of OH bond in H2O. The bond energy of OH bond is equal to, दोनों energies को यहाँ हम जोड़ करके माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से. The sum of the total enthalpy divided by 2 and come for 463.15 kilojoule per mole. Similarly, the bond energy of NH bond in NH3 is equal to the 1/3 of the energy of dissociation of NH3, and that of CH bond and CH4 is equal to 1/4 of the energy of dissociation of CH4. Bond energy in methane CH4CH is equal to total enthalpy divided by 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है तो इतनी हो जाएगी बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इन मीथेन. एंड बॉन्ड एनर्जी रिएक्शन इज दैट मीथेन गोज टू C plus 4H
it is delta H is equal to 1664 kilojoule per mole. तो per bond CH bond energy CH bond is equal to this. Bond energy can be obtained from the data on heats of combustion and heats of dissociation. For example, the bond energy of CH can be determined in the following manner by application of Hess law. CH goes to decomposition, C plus 4H. Bond energy is equal to CH. Bond energy of CH is equal to delta H upon 4. The value of delta H, the following data is considered. CH4 plus O2, then CO2 plus 2H2O liquid, delta H is equal to minus 890.36 kilojoule. Bond energy is also called sometimes the heat of formation of the bond from gaseous atoms constituting the bond with reverse sign. This is the जब दोनों दो एलिमेंट्स के एटम जुड़ करके आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं तो इसके लिए बॉन्ड एनर्जी जो होगी वही कहलाती है बॉन्ड एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन. बॉन्ड एनर्जी HCl इज इक्वल टू माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस में आ रहा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो हो जाएगा प्लस 431 किलो जूल पर मोल. अब वो पहला जो रिएक्शन वहां पे देखा था इस तरह से ये मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. Here delta H is equal to minus 890.36. Now stepwise reaction कैसे होगा? CO2 reacts with graphite to form O2. तो delta H इसके लिए इतना हो गया. H2O liquid breaks into H2 and O2. डेल्टा H इसके लिए हो जाएगा 571.70 किलो जूल. H2 ब्रेक होगा 2 हाइड्रोजन में तो इसके लिए डेल्टा H इज इक्वल टू दिस. एंड ग्रेफाइट कार्बन ग्रेफाइट कन्वर्टेड इनटू कार्बन गैसियस then delta H is equal to this. On adding all equation we get 64G plus 64 CH4 methane converted into carbon and hydrogen and total delta H सबको हम सम ले आएंगे तो आएगा 1663.39 kilojoule. Now hence the bond energy of CH is equal to this upon divided by 4 because 4 hydrogen and carbon bond is present here. Then the value of CH bond is 415.85 kilojoule per mole. This is the calculation of heat of formation or bond energy of the given bond. Now applications of bond energy. Determination of heat of reaction with the help of bond energy. The bond energies can be used for determining heat of reaction. Heat of reaction is equal to sum of bond energies of reactants minus sum of bond energies of product. Now example is here, calculate delta H for the reaction. This is HCl2Cl. यानी कि 2 Cl bond है, 2 CH bond है. Converted into C प्लस 2H प्लस 12 सारे जो है बॉन्ड टूट करके सब अलग हो जाते हैं. नाउ बॉन्ड एनर्जी फॉर CH बॉन्ड एंड CCl बॉन्ड आर 415 किलो जूल एंड 326 किलो जूल रिस्पेक्टिवली. नाउ सॉल्यूशन सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जीज ऑफ प्रोडक्ट. सारी वैल्यूज रखने पे हमको जो दी हुई है कितना आ जाएगा डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी 1482 किलो जूल. अनदर एग्जांपल कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन. डबल बॉन्ड है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड H2 से इसका रिएक्शन होता है तो ये ऐड हो जाता है और CH3 ये बॉन्ड टूटा और नया हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा. द बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इज इक्वल एंड CC and C double bond C and CHR ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं. द रिएक्शन क्या होगा C2H2
जो यहाँ पे दिया था इस तरह से लिख सकते हैं, एंड एच एच हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन सब ऐड हो गई तो ये बॉन्ड 6 बॉन्ड बन गए, 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब डेल्टा एच हमें निकालना है और सबका इंडिविजुअल बॉन्ड एनर्जीज दी हुई है। नाउ डेल्टा एच इज इक्वल टू सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स, सम ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस। तो ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। आगे जहाँ पे सी सी है, यहाँ पे आगे कोई नंबर नहीं है, हाइड्रोजन के आगे 4 है तो 4 इंटू डेल्टा सी एच हो जाएगा। इसी तरह से डेल्टा एच एच, फिर माइनस ये किसका आ जाएगा, प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की जहाँ 6 मॉलिक्यूल है तो ये 6 इंटू इतना हो जाएगा सी एच। Then putting all the values we get 30 minus 30 calorie. Now determination of heat of formation of compound. For this is the example. Using the bond enthalpy data given below, calculate the enthalpy of formation acetone. Bond energy of CH, bond energy of CC, bond energy of C, double bond O, bond energy of OO, सारी चीजें यहाँ दी हुई है। डेल्टा एच सब सी इज इक्वल टू, जो कार्बन सॉलिड है इसके लिए डेल्टा एच इज इक्वल टू दिस। नाउ सोल्यूशन, सी रिएक्शन हो जाएगा, सी प्लस 6G प्लस O इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ एसीटोन टेक्स प्लेस। इन एसीटोन 6CH बॉन्ड, 1C डबल O बॉन्ड है ना, and 2 C bonds are present. Energy release in the formation of these cases. सारी values रखोगे. Now the equation of enthalpies of formation of acetone is C plus 3H2 plus half. Total हमें निकालना है. This equation can be obtained from the given equation. ये इक्वेशन है, इसके लिए टोटल डेल्टा एच कितना है, -3902। अब ये अलग अलग सॉलिड कार्बन से कार्बन गैसियस में कन्वर्ट हुआ, उसके लिए डेल्टा एच इतना है। हाइड्रोजन गैस ये एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुई, उसके लिए डेल्टा एच इतना है। O2 गैस से O नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुई तो इसके लिए डेल्टा एच इतना है। ओवरऑल रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू, ये सारी जो वैल्यू अलग अलग नोट की है, जब इसको इसका सम निकालेंगे तो ओवरऑल वैल्यू आएगी -192.3 किलो जूल। Now experimental determination of the heat of reaction. The heat evolved or absorbed in a chemical reaction is measured by carrying out the reaction in apparatus called calorimeter. The principle of measurement is that heat given out is equal to heat taken, that is P is equal to W plus M into S into T2 minus T1, where Q is the heat of reaction, W is the water equivalent of calorimeter, and M is the mass of liquid in the calorimeter, and S its a specific heat. T2 is the final temperature and T1 is the initial temperature of the system. Different types of calorimeters are used, but two are common, which is described here: water calorimeter and bomb calorimeter. First, we discussed on the about the water calorimeter. It is a simple form of calorimeter which can be conveniently used in calorimeter. This is this पूरा स्ट्रक्चर देख सकते हो। इसमें ये वेसल है और ये इसमें एक थर्मोमीटर यहाँ पे डिप किया हुआ है, ये बॉइलिंग ट्यूब है, छोटा करके इसको देख सकते हो। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर पूरा होता है। तो ये पूरा सिस्टम है और ये बॉइलिंग ट्यूब है और ये थर्मामीटर है। ये क्या है, ये सारी चीज डिस्क्राइब की गई है। It consists of a large vessel A. Okay, this is the vessel.
in which a calorimeter B is held. This is the calorimeter. और वेसल्स कौन सा है, ये पूरा सिस्टम ये वेसल है और ये कैलोरीमीटर है. In between the calorimeter and the vessel, there is a packing of an insulating materials. यहाँ पे insulating materials है, such as cotton wool. Inside the calorimeter, there are holes through which a thermometer. This is thermometer and this is stenner. And the boiling of boiling tube containing reacting mixture. जो ये boiling tube है इसमें reacting mixture present होगी are fitted. A known amount of water is taken in calorimeter. तो ये पूरा structure देख लिया कि क्या क्या है इसमें. The heat evolved during the reaction, which is absorbed by the water. The rise in temperature is recorded with the help of thermometer. The heat evolved is then calculated for the formula. 2 minutes. ये हो गया. The known amount of reacting substance are taken in the boiling tube. The heat evolved during the reaction will be absorbed by the water. The rise in temperature is recorded with the help of thermometer. The heat evolved is then calculated from the formula W plus M into S into T2 minus T1. The second type of calorimeter is bomb calorimeter. This is commonly used to find the heat of combustion of organic substance. It consists of a sealed combustion chamber called bomb. A weight quantity of the substance is in a dish along with the oxygen under about 20 atmospheric pressure is placed in the bomb, which is lowered in water contained in an insulated copper vessel. The vessel is fitted with stirrer and a sensitive thermometer. The arrangement is here. यहाँ पे देख सकते हो. फिर इसको हमें छोटा करना पड़ेगा इस तरह से. ये पूरा सिस्टम है. ये है तुम्हारा स्टील बॉम्ब कहलाता है इसमें, और ये सैंपल लिया जाता है रिएक्टिव मिक्सचर का. ये इग्निशन वायर यहाँ पे, इसको जिससे ये बर्न होता है, ये रिएक्शन होता है. स्टिनर है और ये थर्मोमीटर है, और ये क्या है, ऑक्सीजन यहाँ पे होगी, और ये हीट इंसुलेटिंग कंटेनर है, और इसमें स्टील बॉम्ब, ये सिस्टम जो है ये स्टील बॉम्ब कहलाता है. लाइक दिस. पूरा स्टेटस एक बार फिर से पास से देख सकते हो. ये इग्निशन वायर और ये पूरा स्ट्रक्चर. The temperature of the water is noted and the substance is ignited. यहाँ पे substance को जलाया जाता है by an electric current. After combustion, the rise in temperature of system is noted. The heat of combustion can be calculated from the heat of gained by the water and calorimeter. Since the reaction in bomb calorimeter proceed at constant volume, the heat of combustion measured is delta U. Delta U is equal to W plus M. T2 minus T1 into S upon W1 into M, where M is the molecular mass of the substance and W1 is small w1 is the mass of substance taken. Delta H can be calculated from the equation. Delta H is equal to delta U plus delta nRT. Now here some example. 0.5 gram of benzoic acid was subjected to combustion in a bomb calorimeter at 1500 degrees centigrade. When the temperature of the calorimeter system was found to rise by 0.55 degrees centigrade, calculate the heat of combustion of benzoic acid at constant volume and at constant pressure. The internal capacity of the calorimeter including water was found to be 23.85 kilojoule. Now heat of the solution.
solution of the problem, the heat of combustion as constant volume delta U is equal to heat capacity of the calorimeter and its content into rise in temperature into molecular mass of compound upon mass of compound. तो सारी वैल्यूज रखने पे डेल्टा यू की वैल्यू आएगी -32 100.67 kilojoule. Now we know that delta H is equal to delta U plus delta nRT. For the reaction, delta N is equal to 7 minus 0.5 minus 7.5 हो जाएगा ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है डेल्टा एन आर इज इक्वल टू दिस टी टेम्परेचर जोड़ दिया जाएगा उसमें 273. Now substituting the value in above equation, we get delta H equal to minus 3200 1.867 kilojoule per mole. Now another example, the heat of combustion of ethane gas is minus 368 kilocalorie mole, assuming that 60% of heat is useful. How many meter cube of ethane measured at NTP must be burned to supply heat to convert 50 kilogram of water at 10 degrees centigrade to steam at 100 degrees centigrade. Now heat required per gram of water is equal. Total कर लेंगे इसको. The heat needed for 50 gram of water is per gram water इतना आया कि total इतना हो जाएगा. As the efficiency is 60%, the actual amount of heat is required. This into this upon 60 into 100 हो जाएगा इतना किलो कैलोरी. Number of mole of ethane required to produce 52,500 kilocalorie divided by 368. We get this now volume of 142.663 moles at NTP is equal to multiplied by this multiplied by 22.4. We get 3,195.65 liter. Now this is the तो ये तुम्हारा आज के क्लास की ये सारे कुछ एग्जाम्पल थे जो आज के क्लास में डिस्कस हुए. उसके अलावा हीट थर्मो केमिस्ट्रीज के जो इम्पोर्टेंट लॉ हैं उन दोनों के बारे में जाना. बॉन्ड एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी, तो ये सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर के. और अब जो अगला क्लास होगा उसमें भी सारे टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि हीट ऑफ जैसे कि गिब्स एनर्जी चेंज पे डिस्कस होना है. उसके अलावा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे. तो कल के क्लास के लिए जो अब तक जितना पूरा पढ़ा है इसको फिर से पढ़ने के बाद बैठें ताकि फाइनली जो चीज़ें डिस्कस हो रही हैं वो पूरी तरह से समझ में आ जाए.